Now today we are going to learn about how to create same thing like as object, tab, fields, record, data. But now today we are going to work on the new interface called Salesforce Classic. Basically, Salesforce Classic is an outdated interface. Lightning is a current interface. तो करंट इंटरफेस में कैसे वर्क करना है ये हमने जाना. साथ ही साथ हम लोग वर्क करेंगे ऑन अ क्लासिक इंटरफेस. So to do our task in a classic mode, first of all we need to log in to our Salesforce org. I hope आपका Salesforce org आपने बना लिया है और कल जो भी टास्क हमारा हो गया था वो आपने परफॉर्म किया होगा. Now once you log into your Salesforce org, to jump from Lightning interface to Salesforce Classic interface, this our view profile. Then click over here. After clicking on it, you will get pop-up, and in that pop-up you will find switch to Salesforce Classic. Okay, you just right click on it and open it into a new tab. Okay, now you can see your Salesforce developer org now open in a Salesforce Classic interface. एक चीज यहाँ पे और आपको बता दूं, कल ही Salesforce का जो वर्जन है वो वर्जन चेंज हो गया है. पहले था स्प्रिंग 23, नाउ इट इज समर 23. You can see the logo relevant with this version called summer 23. यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो. This is the new logo for representing the version summer 23. So this 23 is the abbreviation of 2023, and this elephant is showing that it is a summer. Okay, now here also you can see the name summer 23 for developers, right? So summer 23 is now launched. अब क्या करेंगे? Now we try to implement all those things which we learned yesterday, but today's interface is different. Yesterday we discussed and create all those things in a Lightning, but today we are going to develop all those things in a classic mode. Okay, and to do that, first of all we need to go to our setup. ओके, सेटअप पे क्लिक करने के बाद में जो हमारा इंटरफेस ओपन होगा वो होगा क्लासिक इंटरफेस इन अ पास मोड, दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. एंड इसको समझने के लिए आपको इधर क्विक फाइंड मिलेगा और इसके नीचे आपको वेरियस ऑप्शंस मिलेंगे, राइट, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, आपके चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो. सो लेट्स try to create all those things which we learn yesterday. तो पहले हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने क्रिएट किया था ऐप. So to create a app, what we need to do, we need to search for the app manager. Okay, so search for the app manager. Okay, so when you go to the app, you can see manage app option over here, and at the bottom somewhere you will find app manager. Okay, or app. Okay. उधर गए, क्रिएट पे क्लिक किया. क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में यू विल फाइंड द ऑप्शन कॉल्ड ऐप. ओके, एंड just need to click on app to create a new application. Now here you can see the number of application already being there in a classic mode. Okay, और आपको आपको अगर अपना खुद का एप्लीकेशन बनाने का है तो आप यहाँ से अपना खुद का एप्लीकेशन बना सकते हो. सो देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑलरेडी बीइंग देयर. कंटेंट, मार्केटिंग, सेल्स, सर्विसेज, दीज आर द एप्लीकेशन विच इज ऑलरेडी बीन बाय डिफॉल्ट गिवन बाय द सेल्सफोर्स. इसके अलावा हमको खुद का एप्लीकेशन बनाना है तो हम क्या करेंगे, वी जस्ट नीड टू गो टू this new button and click on new button to create a new application in a classic mode. So let's click on new. Now it will ask you about which type of application do you want to create. Do you really want to create a custom app or a console app? So basically whatever the app we are going to create, that is custom app. तो इसीलिए पहला ऑप्शन custom app करके चूज करने का है. Then click on next.
बिफोर वी मूव फर्दर, इधर आप देख लो, देयर आर 5 स्टेप्स टू क्रिएट अ ऐप। ओके, और लाइटनिंग में भी 5 स्टेप्स थी टू क्रिएट अ ऐप। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, सेम इंटरफेस है जो लाइटनिंग में हमको मिला था, सेम इंटरफेस इधर है, सॉरी सेम ऑपरेशनल चीजें यहाँ पे जो लाइटनिंग में अवेलेबल थी, सिर्फ उसका इंटरफेस चेंज हो गया है ना। विजिबिलिटी जो हो रही है हम लोगों को, जो इनहांस विजिबिलिटी वहां पे थी, इंटरफेस उधर था, उससे लेस इनहांस इंटरफेस क्लासिक में दिखेगा आपको। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप जहाँ पे आपको ऐप का लेबल पास ऑन करने का है। सो लेट्स से थर्ड ऐप। ओके, सो दिस इज द लेबल ऑफ माय ऐप, जो लेबल का यूज करके मैं एप्लीकेशन को सर्च आउट कर सकता हूँ। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। then it will ask you if you want to upload any logo relevant with your application, तो आप इधर से लोगो लोड कर सकते हो, अदरवाइज यू जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन दिस इज द मेजर थिंग, आप जो भी एप्लीकेशन आप बनाओगे उस एप्लीकेशन में आपको टैब्स ऐड करने होते हैं। अगर आपने ऑलरेडी टैब क्रिएट किया है तो आप यहाँ से वो टैब को चूज करके आपके एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ऐड बटन। और अगर आपको ये पर्टिकुलर टैब यूज नहीं करना है, ये नहीं चाहिए आपके एप्लीकेशन के अंदर, तो आप इसको चूज करके रिमूव भी कर सकते हो। सो यू कैन easily add a tab into the app or remove the tab from the app। क्लियर? सिमिलरली अगर आप एक से ज्यादा टैब इधर ऐड करते हो और आपको इसका सीक्वेंसिंग लगाना है, देन यू कैन यूज दिस 2 बटन्स अप एंड डाउन। तो उसका यूज करके आप अपने टैब्स को मैनेज कर सकते हो इनटू द ऐप। सो राइट नाउ बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होम टैब है, इसको एज इट इज रखेंगे, ये रिमूव नहीं होता है क्लासिकल में। वेयर एज लाइटनिंग में होम बटन या फिर होम टैब जो है वो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं होता है, यू नीड टू इंक्लूड। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिक एंड लाइटनिंग। नाउ नेक्स्ट, देन वी आर एट दी स्टेप नंबर 5 ऑफ स्टेप 5। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको प्रोफाइल चूज करने का है। ये एप्लीकेशन कौन से प्रोफाइल को हमको शो करने का है, ये हमको यहाँ से चूज करना है। if you want to show that particular application to all the profiles present in a Salesforce, then you can directly select this particular option visible, otherwise you can deselect it and select the appropriate profile जहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन शो करने का है। हमारा प्रोफाइल हमको पता है कि हमारा प्रोफाइल है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उसको ही हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे चूज करेंगे। इससे क्या होगा, इससे इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन विजिबल हो जाएगा। ओके, एंड एट द लास्ट यू नीड टू क्लिक अ बटन कॉल्ड सेव to create your application। So just click on save to check whether the application is created or not। Now you can see your third app is a custom app। So you can see there is an option called custom और वो checked है। इसका मतलब क्या है, this is the app that is custom app which is created by the user। Okay, now you can create a app, साथ ही साथ आप ऐप को शो भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। so you are able to create then read the particular app। साथ ही साथ अगर इस ऐप को एडिट करने का है, डिलीट करने का, तो ये भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है। आप क्रड ऑपरेशन इस एप्लीकेशन पे परफॉर्म करते हो। तो कल भी हमने क्रड ऑपरेशन देखा, आज भी हम क्रड ऑपरेशन देख रहे हैं। तो क्रड ऑपरेशन में क्रिएट, रीड, अपडेट बाय यूजिंग edit button, and you can perform a delete operation। so we are able to perform all these operation on this application। okay, so this is the simple way to create a application। now you must remember how many steps are there to create a application। ये जनरली इंटरव्यूज में पूछा जाता है और इससे ही हम लोगों को आगे आने वाला चैप्टर हमको पढ़ने का है। ओके, सो वी ऑलरेडी बीन क्रिएटेड आवर एप्लीकेशन। फिर हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, फिर हम लोग क्रिएट करते हैं हमारा टैब। राइट, तो कल हमने देखा था कि टैब क्रिएट करने के लिए पहले टैब में जाओ, टैब में जाने के बाद में सिलेक्ट अ न्यू टू क्रिएट अ न्यू टैब। ये सारा इंटरफेस उधर भी था और इधर भी है, सिर्फ आजू बाजू की चीजें एनहांस की हुई है। ओके,
Now click on new to create a tab and you need to select the ऑब्जेक्ट। अभी हमको पता है कि हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं किया है एप्लीकेशन के लिए। सो अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हो तो आप टैब नहीं बना सकते हो, ये मेरी बात याद रखना। इफ यू डोंट हैव an ऑब्जेक्ट देन यू आर नॉट सपोज टू क्रिएट अ टैब। ओके, सो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, देन एंड ओनली देन वी आर एबल टू क्रिएट अ टैब। नाउ टू क्रिएट a object we need to go to once again a create, okay, and here you will find the option called objects. So click on this to create a new object. Now you can see there are two custom object which is already being there, जो हमने प्रीवियस सेशंस में क्रिएट किए थे। अभी हम क्या करेंगे, हमारा खुद का एक कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग दिस क्लासिक इंटरफेस। सो यू जस्ट क्लिक ऑन न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट to create a new object. Now let's create a new object with the name course. Okay, let's give the plural courses. Okay, or you can create your own ऑब्जेक्ट, जो भी आपको लगे कि ये मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आप वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, राइट। लेट्स से फैकल्टी रजिस्ट्रेशन, तो हम क्या करेंगे, फैकल्टी नाम का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो वी ट्राई टू क्रिएट अ फैकल्टी object, let's say faculties, okay, plural, then object name is फैकल्टी। एक्चुअली वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट करता है, पहले मैंने कोर्स दिया था इसलिए वो कोर्स उधर उसने ऑब्जेक्ट नेम उठा लिया था। एंड देन यू नीड टू क्रिएट अ फील्ड। ओके, हमने कल भी जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तब भी हमने फील्ड क्रिएट किया था। ये फील्ड स्टैंडर्ड फील्ड करके कंसिडर होगा। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कितने नंबर ऑफ स्टेप्स है, तो बस एक स्टेप में ही आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो। नाउ हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फील्ड फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो मैं इधर बनाऊंगा फैकल्टी आईडी विच इज ऑटो नंबर, और इधर मैं इसका फॉर्मेट दूंगा F-000। okay, and the number should start from 001। now you need to select all these options, ये बाद में भी select कर सकते हो depend upon the usage, but पहले भी select किया तो कोई नहीं होगा। then because you are in a developer org, you should select this option as a deployed, not a development, okay, and then allow for a search and just click on save to create a object। once you click on a save, the object is created। you can see singular is faculty, plural is faculties, object name, api name। so इधर api name देखो, ये underscore underscore c है, right। so what is that underscore underscore c is denoting? It is a custom object, okay, and this api name is always referred when you are doing a programming, okay। तो ये फैकल्टी ऑब्जेक्ट से कोई डेटा आपको रिट्राइव या फिर इस फैकल्टी ऑब्जेक्ट में कोई डेटा पास ऑन करने का, स्टोर करने का है बाय यूजिंग अ क्वेरी लैंग्वेज, तो आप इस एपीआई को यूज करते हो, क्लियर, तो वो वहां पे यूज होगा। नाउ एट द बॉटम यू कैन सी वी हैव अ स्टैंडर्ड फील्ड्स, जिसमें हमने जो फैकल्टी आईडी था वो बनाया था, तो ये स्टैंडर्ड फील्ड करके कंसिडर होगा। एंड इफ यू वांट टू क्रिएट अ कस्टम फील्ड देन वी हैव ऑप्शंस ओवर हियर टू क्रिएट अ कस्टम फील्ड्स। okay, let's try to create few more fields relevant with this faculty object। तो फैकल्टी है, फैकल्टी का हमने फैकल्टी आईडी लिया। लेट्स ट्राई टू क्रिएट फ्यू मोर थिंग्स, फॉर एग्जांपल फैकल्टी नेम, देन फैकल्टी का सैलरी, फैकल्टी का एक्सपीरियंस। ये दो तीन चीजें हम लोग एज अ फील्ड करके यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। बट बिफोर दैट आई वांट यू to perform these operations in a classical mode, okay, so I will give you 5 minutes to perform all these operations। तो आपको करना क्या है, पहले ऐप बनाना है with a name third app, then you have to create a faculty object, okay, and फिर हम लोग साथ साथ में फैकल्टी ऑब्जेक्ट के अंदर नंबर ऑफ फील्ड्स क्रिएट करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट सॉरी टैब क्रिएट करेंगे, फिर एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे। सो आई होप यू आर गोइंग टू डू दिस टास्क। ओके, सो आप स्टार्ट कर दो।
क्लासिक मोड में कैसे जाने का, यू प्रोफाइल पे जाने का, उधर क्लासिक का ऑप्शन आता है, क्लासिक में जाने का, ओपन करने का, देन ऑब्जेक्ट के लिए किधर जाने का, पास साइड में जाने का, दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड टू गो टू द पास यू नीड टू क्लिक ऑन सेटअप। वंस यू क्लिक ऑन सेटअप यू आर एंटर इनटू द पास, और फिर इधर क्या कहाँ पे जाने का, इधर जाने का क्रिएट पे। क्रिएट पे जाने के बाद में यू हैव एन ऑप्शन कॉल्ड एप्स, फिर you have an option called object. So you go to the apps, create your apps, then go to your object and create your object. So I will give you 5 minutes to do these things, 5 to 6 minutes. ये 5-6 minutes में आप क्लियर कर लोगे, एंड यू जस्ट पोस्ट द डन मैसेज ऑन अ चैट बॉक्स, ताकि हम लोग फिर आगे बढ़े। ओके, as you are posted the message that you have done this exercise, now let's try to create a few more fields relevant with the faculty. तो इधर मैं फील्ड्स क्रिएट कर पहले मेंशन कर लेता हूँ, और उसके डेटा टाइप, ताकि हमको इजी जाए कि हम लोग कौन सा फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, उसका क्या डेटा टाइप होना चाहिए। ओके, अब देखो फैकल्टी है, सो वी रिक्वायर्ड अ फैकल्टी नेम। ओके, देन नेक्स्ट आता है फैकल्टी एक्सपीरियंस, देन फैकल्टी सैलरी। ओके, और क्या ले सकते हैं फैकल्टी के लिए, फैकल्टी का सब्जेक्ट कौन सा है। ओके, सो दीज आर द फील्ड्स विच वी आर गोइंग टू क्रिएट इन अ फैकल्टी ऑब्जेक्ट। अब फैकल्टी नेम, नेम है तो कौन सा डेटा टाइप आएगा, तो इसका डेटा टाइप आएगा टेक्स्ट। फैकल्टी एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इट इज इन अ ईयर्स, ओके, एंड ईयर्स इट इज नथिंग बट a number. Then salary, salary it is a rupees or a dollar, so it is a currency. So that's why we are going to select the data type as a currency. And last में आता है subject, subject is also a string, that's why data type is text. So basically we are going to create these four major fields relevant with our faculty. To do that, just go to your developer org. Now you have already been created ऑब्जेक्ट कॉल्ड फैकल्टी। इस ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद में फिर आपको किधर जाने का है, कस्टम फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाने का है। फिर इधर आपके पास में तीन ऑप्शंस है, वन इज योर न्यू, सेकंड इज फील्ड डिपेंडेंसी, देन सेट हिस्ट्री ट्रैकिंग। ये सारी चीजें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे बट वन बाय वन। तो पहले अभी हमको क्या करने का है, सिर्फ हमको कस्टम फील्ड्स क्रिएट करने का है, एंड टू डू दैट वी नीड टू क्लिक ऑन न्यू बटन टू क्रिएट अ न्यू फील्ड। Okay, once you click on new, then it will ask you about a data type. So this is my field name, और उसका डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट है। सो उसके लिए डेटा टाइप सबसे पहले टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे। सो हियर इज द डेटा टाइप टेक्स्ट, जस्ट सिलेक्ट दिस एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन इट विल आस्क अबाउट द फील्ड लेबल, जस्ट पास द फील्ड लेबल। तो इधर हमने फील्ड लेबल क्या लिखा था, इधर फील्ड लेबल लिखा था फैकल्टी नेम, सो आई हैव जस्ट पास दिस फील्ड लेबल over here as a faculty name. Okay, now this faculty name is automatically been read by this field name. Okay, फील्ड लेबल जो होता है वो एक्सटर्नल यूसेज के लिए होता है, मतलब इंटरफेस के टाइम पे काम में आता है, और फील्ड नेम ये हमेशा इंटरनल पर्पस के लिए होता है। नाउ यू नीड टू पास द लेंथ, कितने लेंथ का आपका नेम होना चाहिए फैकल्टी का। सो 50 कैरेक्टर इज द सफिशिएंट लेंथ। if you want to make this particular field as a required field or a mandatory field, then you have an option called required over here. If you click on this, then this field is considered to be a mandatory field. Okay, and then just you need to click on next. Now please remember how many steps are there, how many steps are there to create a field. So there are 4 steps. तो ऑब्जेक्ट जब बनाया था तो एक स्टेप था, ऐप जब बनाया तो 5 स्टेप्स थी, अब फील्ड जब बना रहे तो 4 स्टेप्स है, ये याद रखना। नाउ यू नीड टू सिलेक्ट द प्रोफाइल्स। ओके, तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमने कोई प्रोफाइल चूज नहीं किया था,
कोई फील्ड चूज नहीं किया था, कोई ऑब्जेक्ट चूज सॉरी कोई ऐप चूज नहीं किया था, बट ऐप जब क्रिएट किया था तब हमने टैब सिलेक्ट किया था, प्रोफाइल सिलेक्ट किया था। क्लियर? वो स्टेप्स याद रखने हैं आपको। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जब आप फील्ड क्रिएट करते हो तो आपको प्रोफाइल चूज करने का है कि ये पर्टिकुलर फील्ड आपको कौन से प्रोफाइल को शो करने की है। तो इधर आप देख सकते हो ऑल द प्रोफाइल्स आर ऑलरेडी बीइंग चेक्ड। इसको आप चेक अनचेक नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर फील्ड को रिक्वायर्ड बोला है। रिक्वायर्ड बोला है, इसकी वजह से ये फील्ड जो है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी और सारे के सारी प्रोफाइल्स के लिए ये फील्ड मैंडेटरी हो जाएगी। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ यू कैन सी योर फील्ड इज एडेड इनटू द लेआउट। ये लेआउट के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। सो लेआउट ये हमेशा सेल्सफोर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, डिपेंड ऑन दी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो उसका लेआउट ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स क्रिएट करता है फ्रंट एंड के साइड में। उसी लेआउट के अंदर हम ये फील्ड को ऐड कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये होता है। एंड देन फाइनली क्लिक ऑन सेव एंड न्यू। सो सेव करोगे तो सिर्फ ये सेव हो जाएगा, सेव एंड न्यू करोगे तो ये सेव होगा और आप न्यू फील्ड्स को क्रिएट करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। सो अभी हमको कितने फील्ड्स क्रिएट करने के? 4 फील्ड्स क्रिएट करने के। तो ये फर्स्ट हो गया, इसलिए मैं क्लिक करूंगा सेव एंड न्यू पे। सो इट सेव द फर्स्ट फील्ड एंड जंप ऑन दी न्यू फील्ड। सो सेकेंड फील्ड कौन सा है हमारा? सेकेंड फील्ड है हमारा फैकल्टी एक्सपीरियंस, जिसका डेटा टाइप क्या है? नंबर। एंड इसीलिए इधर से डेटा टाइप हम चूज करेंगे नंबर। सो आई विल चूज नंबर एज अ डेटा टाइप। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे भी 4 स्टेप्स रहेंगे, हर फील्ड क्रिएशन में 4 ही स्टेप्स रहेंगे। नाउ इट विल आस्क यू अबाउट द फील्ड लेवल। तो फील्ड लेवल है फैकल्टी एक्सपीरियंस। अब फैकल्टी एक्सपीरियंस ये डेसिमल प्लेसेस में भी हो सकता है। सो वैसा लेंथ 18 का है। सो विल पास इट ऑन कि हमारा एक्सपीरियंस 99 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सो 2 डिजिट्स आर सफिशिएंट एंड सिमिलरली डेसिमल पॉइंट के बाद में भी 2 डिजिट्स आर सफिशिएंट फॉर दैट। If you want to make this field as a required field, you can choose this. Otherwise, keep it is as it is. Okay, and then click on next. Then it will ask you about the प्रोफाइल। ओके, किस प्रोफाइल को ये शो करने का है। अब देखो वहां पे हमने उसको मैंडेटरी नहीं बोला, तो इधर हमारे पास में ऑप्शन है, वी कैन सिलेक्ट एंड डिससिलेक्ट दिस विजिबिलिटी टू दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल। अब हमको ये क्या करने का, ये फील्ड सिर्फ शो करने की है टू द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ओनली। दैट्स व्हाई वी चूज दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल एंड डिससिलेक्ट ऑल दी प्रोफाइल। देन वी क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड एट द लास्ट ये बोलेगा कि फैकल्टी लेआउट में आपका सेकेंड फील्ड ऐड हो चुका है। Now, simply you just click on Save and New button to create a new field and save the previous one. Now, the next field is faculty salary, whose data type is currency. That's why we are going to choose data type as a currency from here. So here is a currency. So select currency as a data type. Then click on next. Then you need to pass the field label, that is faculty salary. नाउ सैलरी कितने डिजिट्स का सैलरी हो सकता है? लेट से 6 डिजिट का सैलरी, 7 डिजिट्स का सैलरी दे सकते हैं मैक्स टू मैक्स। एंड पॉइंट के बाद में 3 डेसिमल नंबर्स भी हम लोग इसमें पास करेंगे। ओ शिट। ओके, देन if you want to make this field as a required, you can choose from here. Otherwise, keep as it is. Then click on next. Then you need to choose the visibility. I am deselecting all the profile and only select for the system administrator, and then click on next and finally click on save and new. You need to verify whether this particular field is added into that layout or not. अगर ये unchecked होगा तो उसको check करना जरूरी है। Okay, then click on save and new to create a new field, and the last field is faculty subject. The data type once again is a text. So you need to select the data type as a text. So you can select this data type as a text and then click on next. Then it will ask you about the label. Let's enter the label faculty subject. It will ask about the length. Subject का नाम max to max
20 कैरेक्टर्स का हो सकता है, सो वी विल पास 20 कैरेक्टर। हो सकता है मतलब हम लोग प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं कि 20 कैरेक्टर का होगा। अगर ज्यादा अगर है तो आप उसकी लेंथ बढ़ा सकते हो। If you want to make this particular field as a required or the mandatory, then you can choose this. Otherwise, keep as it is. Then click on next. Then select the profile. I'm going to select the profile as a system administrator. Then click on next. And finally, I'm going to save. अभी इसके बाद में मेरे को field नहीं create करना है. That's why I am not going to click on save and new. I am just clicking on save button. Okay, once you click on it, you can see there are 4 different fields has been created. That is faculty experience, faculty name, faculty salary, and faculty subject. So all these fields are custom fields which we created being an user. Okay, so now it's your turn. You have to create these 4 fields in your object. ओके मैं रेफरल के लिए आपको ये एक्सेल शीट दे दूंगा, आप इसको क्रिएट करो। यू हैव 5 मिनट्स एंड यू जस्ट पोस्ट द डन मैसेज वंस यू फिनिश दिस टास्क। ओके ओके लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ tab in our application. So to do that, you just go to your developer org and go to your setup. तो setup में already हम लोग हैं। Then you go to the create and here you will find the option for tab creation. So that is tabs. So click on tabs. Once you click on the tabs, here you will find there are few custom tabs which we already been created in previous sessions. लेकिन अब इनका यूज नहीं करने का है हमको, हमारे फैकल्टी ऑब्जेक्ट के लिए हमारा खुद का टैब क्रिएट करने का है। एंड टू डू दैट वी हैव अ न्यू बटन ओवर हियर। So you just need to click on new to create a tab. Now you can see there are 3 steps to create a tab. ये याद रखना कितने स्टेप ऐप के लिए लगते हैं 5, टैब के लिए कितने लगते हैं 3, ऑब्जेक्ट के लिए 1 एंड फील्ड्स के लिए 4। ये याद रखना है आपको। ओके देन you need to select the object. Okay, so we already been created faculty object, so we create a or we select the object called faculty. Then you need to select the tab style. So just click on search and you can choose anything from here. Okay, let's say books. Okay, so we choose this style, then just click on next, keep the things as it is, rest of the things as it is. Then we are on the second step. From here we need to select a profile, to which profile this particular tab is going to show. Okay, अब देखो बाय डिफॉल्ट ये सभी के लिए ऑन है। कल भी मैंने ये चीज आपको बताया था, हमको ये सबके लिए विजिबल नहीं रखना है, हमको ये हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ही विजिबल रखना है। एंड टू डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, एक ये अप्लाई फॉर ऑल और दूसरा है अप्लाई अ डिफरेंट टैब्स। अगर आप इधर चूज करोगे तो हर एक के लिए ऑफ ऑफ करते हुए चलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है, तो पहला ऑप्शन चूज करो, इधर से सबकी विजिबिलिटी ऑफ कर दो एंड देन सिलेक्ट द सेकेंड ऑप्शन, ताकि सबकी विजिबिलिटी ऑफ हो और जिसकी विजिबिलिटी आपको ऑन करना है फिर आप उस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे जाके आप उसकी विजिबिलिटी ऑन कर सकते हो। राइट, सो वी ऑन द विजिबिलिटी, सॉरी ये गलत के लिए हो गया। सो वी नीड टू सिलेक्ट दिस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सो वी नीड टू सिलेक्ट system administrator as an visibility on. Okay, and then click on next. This one is our last step. यहाँ से आपको इस टैब के लिए एक एप्लीकेशन ढूंढना है, कौन से एप्लीकेशन के अंदर ये टैब यानी कि ये पर्टिकुलर टैब प्रेजेंट होगा। सो देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देयर, और सबके लिए अगर आप विजिबल करोगे तो सब एप्लीकेशन में ये शो होगा। हमको सब एप्लीकेशन में नहीं शो करना है, हमको सिर्फ हमने जो एप्लीकेशन बनाया दैट इज थर्ड ऐप, इसके लिए ये पर्टिकुलर फील्ड और टैब आपको शो करने का है। दैट्स व्हाई वी सिलेक्ट थर्ड एप्लीकेशन ओनली एंड देन जस्ट क्लिक ऑन सेव टू क्रिएट अ टैब। So now you can see we create a tab
विद द नेम फैकल्टीज। अब देखो फैकल्टीज ये नेम हमने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया था, ये फैकल्टीज नेम हमने जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तब प्लूरल में दिया था, राइट। तो यानी कि क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट करते हैं तभी हम टैब के लिए एक नेम स्पेसिफाइड कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लूरल, उधर से वो नेम उन्होंने बराबर उठाया है और इस पर्टिकुलर टैब को असाइन किया है। In that particular way you are able to create your custom tab. Okay, now let's try to create your own custom tab. I will give you 2 minutes, 3 minutes is sufficient to create this faculty tab. Okay, go for it and just post the message that you have done with this faculty tab. Let's move ahead. अभी हमने क्या बनाया, अभी हमने ऐप बनाया, हमने ऑब्जेक्ट बनाया, हमने फील्ड्स बनाया, हमने टैब्स बनाया। नाउ वी नीड टू यूज दिस एप्लीकेशन एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो हमने हमारा एप्लीकेशन बना लिया, उसके अंदर टैब बना लिया, अब उसको यूज करना है। यूज करेंगे और उसके अंदर हम हमारा डेटा फीडअप करेंगे और फिर देखेंगे कि हाउ दिस डेटा इज नाउ कन्वर्टेड इनटू एन रिकॉर्ड्स। ओके, एंड टू डू दैट, अब ये लाइटनिंग एक्सपीरियंस में ऐप लॉन्चर ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐप लॉन्चर हमेशा लाइटनिंग एक्सपीरियंस में होता है, इधर लैप ऐप लॉन्चर कुछ भी नहीं होगा। इधर आपको ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिलेगा ऑन द राइट हैंड साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर, इस पे आप क्लिक करोगे देन यू विल सी दैट इधर जितने भी एप्लीकेशंस होंगे रिगार्डिंग दिस क्लासिक इंटरफेस वो सारे के सारे इधर शो हो जाएंगे एंड यू कैन सी योर थर्ड ऐप प्रेजेंट ओवर हियर। So what you are going to do, you need to click on this third app to launch this app. Now the app is launched. It means we are in the SaaS side. SaaS यानी कि software as a service. Now this third app is already being launched. अब इसको use करना है, use करने के लिए we already created a tab with the name faculties. You can see the faculties tab is present on the left hand side topmost corner. So to use that we need to click on this faculties tab, and when I click on it you can see the color as well as book icon over here. तो वो टैब जब हमने क्रिएट किया था तब हमने उसका स्टाइल सिलेक्ट किया था, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो थीम उसके ऊपर सूट हो गई है। नाउ यू कैन सी देयर इज नो रिसेंट फैकल्टीज बीइंग एडेड। अब क्या करेंगे, हम हमारा डेटा ऐड करेंगे इनटू दिस एप्लीकेशन एंड टू डू दैट वी हैव न्यू बटन ओवर हियर, जस्ट क्लिक ऑन न्यू एंड यू कैन सी जो फील्ड्स हमने फैकल्टी ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट किया था उससे रिलेवेंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारा ऑलरेडी तैयार है। सेल्सफोर्स ने क्या किया, खुद खुद ने उसकी प्रोग्रामिंग किया और उसके लिए आपको ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया है। जनरली वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, ये इंटरफेस क्रिएट करने के लिए आपको HTML CSS ये सारा यूज करना पड़ता है, उसकी कोडिंग करनी पड़ती है, फिर जाके कोई फॉर्म क्रिएट होता है। अब ये इतना बड़ा इंटरफेस क्रिएट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, राइट। सो आप देख सकते हो कि इधर हम लोगों को रेडीमेड इंटरफेस प्रोवाइड हो चुका है, रेडीमेड सारी चीजें अवेलेबल हो चुकी है। नाउ फैकल्टी नेम हमने क्या किया था, मैंडेटरी किया था, यानी कि रिक्वायर्ड किया था। दैट्स व्हाई यू कैन सी अ रेड vertical line present over here. That red vertical line is representing that this particular field is mandatory. Without entering this data you are not supposed to save the data. So इधर आप directly save करने की कोशिश करो तो इधर आपको error आएगा, you must enter the value because it is a mandatory field. Okay, so let's try to save the data relevant to faculty. Let's say Abhishek is the name of the faculty. The total experience is of 12 years. Let's say salary around 75,000 rupees and subject taught is, let's say, ML, that is machine learning. Okay, now we try to save this data. जब ये डेटा सेव होता है तो इससे रिलेवेंट फैकल्टी आईडी देखो ऑटोमेटिकली जनरेट हुई, फैकल्टी नेम, देन वी हैव टोटल ईयर एक्सपीरियंस, देन वी हैव सैलरी इन रुपीज, ओके, एंड द सब्जेक्ट एक्सपर्टीज ML। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड फील्ड है कि किसने क्रिएट किया, किसने लास्ट में मॉडिफाइड किया, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है सेल्सफोर्स फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। Now you can see all these things are present over here. Let's try to add few more data into my application, and to do that once again I need to click on new
Then I need to enter the name. Let's say Pratik. Total experience is of 14 years. Salary is of 85,000 rupees. And let's say subject expertise data structure. So DSA. Okay, let's click on save and new to create a new faculty. Then let's say Raja. Total experience is 10 years. Salary is 65,000 rupees. And subject expertise Java. And let's click on save. Now you can see this record is saved. If you click on the faculties, you can see the list of the faculties which is being registered in your application. Okay, so आप जब भी ये फैकल्टी आईडी पे क्लिक करोगे तो ये एक्सप्लोर करेगा और ये डिटेल इंफॉर्मेशन दिखाएगा रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर फैकल्टी की ये 003 कौन है, तो कौन है, उसका नाम है राजा. ओके, सो दिस राजा इज द डेटा फॉर द फील्ड फैकल्टी नेम. 10 is the data for the field faculty experience, but when this data comes together it considered to be a record. So F003 it is a record for the faculty called Raja. Okay, so we are seeing that कि हम किस तरह से किसी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं और किस उस डेटा को हम रिकॉर्ड कब कहेंगे, जब वो कंबाइन हो जाएगा तो उसको हम रिकॉर्ड कहेंगे. Now you have a different options over here. You have a edit option and a delete option. You have a clone option and you have a sharing option. If you want to edit any one of the data relevant with this particular faculty, you can just click on edit, and you can, if you want to change the salary, you can change from here and just click on save. तो देखो आपका सैलरी एडिट हो गया, अपडेट हो गया है. सो वी आर नॉट राइटिंग एनी कोड रिलेवेंट विद द एडिट बटन. We are not writing any code relevant with the save button. We are also not write any code relevant with the delete button. Okay, if you want to delete this record, you just simply click on delete, और data delete हो जाएगा. Even though ये same replica आपको करने का है, so you just click on clone. So all the data is replicate over here. Okay, and instead of Raja we said Sandesh. Okay, and you just need to click on save. Now new record is saved. तो राजा का सारा डेटा अगर हमको क्लोन करने का है विथ अ डिफरेंट नेम तो आप वैसा भी कर सकते हो. सो इन दैट वे यू आर सपोज टू एक्सेस योर ऐप टैब एस ऑब्जेक्ट फील्ड्स data and records. I hope you'll understand all those concepts in a lightning as well as in a classical mode. Okay, so इसके पहले जो देखा था वो था lightning, अभी जो देख रहे हैं वो है classic. So इधर एक काम करते हैं, ये faculties पे मैं क्लिक कर लेता हूँ and I'm going to click on new. Okay, you can see this interface. और इधर हमारा ये अभी बेसिकली क्या होगा, हम किसी एक मोड में ही वर्क कर पाएंगे. सो शायद ये कन्वर्ट कर दे आपको. लेट्स ट्राई टू फेच थर्ड ऐप इन अ लाइटनिंग एक्सपीरियंस. नाउ यू कैन सी थर्ड ऐप आपने क्लासिक में क्रिएट किया था, लेकिन वो एप्लीकेशन आपके लाइटनिंग में शो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि क्लासिकल इज अ लोअर वर्जन. ओके, एंड लाइटनिंग इज अ हायर वर्जन. तो इधर लोअर वर्जन में कुछ बनाओगे तो हायर वर्जन में रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला है. ओके, so you are not supposed to access the third app in a lightning experience if it is created in a classic interface. Okay, सो दिस इज ऑल अबाउट दी बेसिक्स. अब देखो ये 4-5 दिन से यही चल रहा है हम लोगों का. हम हम उसी के बारे में बात करें कि ऐप क्या होता है, टैब क्या होता है, एस ऑब्जेक्ट क्या होता है, देन फील्ड्स क्या होती है, डेटा क्या होता है, रिकॉर्ड्स क्या होता है. बट आप पेशेंसली सुन रहे हो उसके लिए थैंक यू, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. ये जब तक नहीं समझेगा हम सेल्सफोर्स को आगे लेके नहीं जा सकते. दैट्स व्हाई ये 2-3 बार रिपीट हुआ है, लेकिन ये अच्छे के लिए रिपीट हुआ है. ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस. एक 10 मिनट में आपके और लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीजें और एक्सप्लेन करनी है आपको. बेसिकली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सीक्वेंस एंड इंटरडिपेंडेंसी. ओके, अभी हमने ऐप टैब एस ऑब्जेक्ट सारी चीजें पढ़ी, अब इसका सीक्वेंस और इंटरडिपेंडेंसी हम लोग को पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरडिपेंडेंसी. सो हाउ मेनी बेसिक वोकेबुलरीज आर देयर. तो पहला होता है ऐप, दूसरा होता है टैब्स, तीसरा होता है एस ऑब्जेक्ट,
फोर्थ होता है फील्ड्स, और सबसे लास्ट में आता है प्रोफाइल्स. ओके, इधर डेटा एंड रिकॉर्ड इज बेसिकली रिलेवेंट विद द fields. That's why we are not considering data and records over here. So आप देख सकते हो apps, tabs, as object, fields and profile are the main things in a Salesforce. How many steps are there for apps? So they are, sorry, पहले ये समझ लो कि प्रोफाइल क्या आता है. तो हमने प्रोफाइल को देखा कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करके. ओके, how many steps are there in a apps? So there are 5 steps in a app creation. उसमें से आपको अगर याद आता होगा, अभी हमने किया ऐप क्रिएशन, तो उसमें जब हम ऐप बनाते हैं तो ऐप बनाते वक्त हमको टैब्स की जरूरत होती है. सो ऐप इज इंटरडिपेंडेंट ऑन अ टैब. सो यू नीड टू बी मेन कंसिडर द डिपेंडेंसी बिटवीन दिस टू. सो ऐप इज डिपेंडेंट ऑन अ टैब्स. ऐप अगर क्रिएट करना है तो टैब आपको पता होने चाहिए ही चाहिए. नेक्स्ट, या फिर बाय डिफॉल्ट एक आधा टैब उसके अंदर होना चाहिए, नहीं भी हुआ लाइटनिंग तो आपको अलाउड कर देता है. देन ऐप इज ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन अ प्रोफाइल. सो वेन एवर वी क्रिएट अ ऐप, तो ये ऐप किस प्रोफाइल को शो करने का है ये आप लोग वहां पे मेंशन करते हो. सो इट मींस दैट द एप्लीकेशन इज इंटरडिपेंडेंट ऑन अ प्रोफाइल. सो हमने क्या किया, एक ऐप क्रिएट किया और उसको शो किया टू द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एज अ प्रोफाइल. तो आपको याद आता होगा, तो इधर हमारा इंटरडिपेंडेंसी शो होता है. सेकेंड चीज आता है टैब. इफ यू वांट टू क्रिएट अ टैब, वी यूज 3 steps टू क्रिएट द टैब. उसमें से जब हम लोग टैब क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमको चाहिए मेजरली एस ऑब्जेक्ट. विदाउट हैविंग एस ऑब्जेक्ट यू आर नॉट सपोज टू क्रिएट अ टैब. ओके, सो इसका मतलब है टैब इज इंटरडिपेंडेंट ऑन द एस ऑब्जेक्ट. Similarly, when we create a tab, we need to show that tab to a particular profile. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल है या दूसरा कोई प्रोफाइल है, तो उसको आपको विजिबिलिटी ऑन और ऑफ करनी होती है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन द प्रोफाइल. सिमिलरली टैब इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द ऐप. जो भी टैब आप क्रिएट करते हो वो किसी ना किसी एप्लीकेशन के अंदर आपको ऐड करना होता है. दैट्स व्हाई आपके पास में थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, आप ऐप सिलेक्ट करते हो. ओके, so it means that tab is actually relevant or interdependent on s object, profile as well as app. नेक्स्ट आता है एस ऑब्जेक्ट. एस ऑब्जेक्ट रिक्वायर ओनली 1 स्टेप. और वैसे देखा जाए तो एस ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ना ही आपको टैब की जरूरत होती है, ना ही आपको ऐप की जरूरत होती है, ना ही आप कोई प्रोफाइल उसके लिए शो करते हो. सिर्फ एक स्टैंडर्ड फील्ड क्रिएट होती है. दैट्स व्हाई इट हैविंग अ correlation. Actually it doesn't have any interdependency, it having their correlation एस ऑब्जेक्ट का फील्ड के साथ में. सो इंटरडिपेंडेंसी एस ऑब्जेक्ट की एज सच किसी भी बेसिक थिंग्स के साथ में नहीं होती है. सो एस ऑब्जेक्ट इज अ इंडिपेंडेंट थिंग. एंड देन फाइनली टैब जो सॉरी फील्ड जो होती है, फील्ड क्रिएट करने के लिए हम लोग 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं. अभी आपने देखा 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं. उसमें से फर्स्ट फील्ड लेबल वगैरह हम लोग पास करेंगे एंड फील्ड का डेटा टाइप सिलेक्ट करेंगे. देन फील्ड कब तक क्रिएट नहीं होगी, जब तक उसका एस ऑब्जेक्ट नहीं होगा. अब फैकल्टी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में ही आप उसके लिए फील्ड क्रिएट कर सकते हो, आप डायरेक्टली फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते. इट मींस दैट फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन एस ऑब्जेक्ट. ओके, सो वी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट. विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट यू आर नॉट सपोज टू क्रिएट अ फील्ड. Similarly, when we create a field, we need to specify a profile. कौन से प्रोफाइल के लिए ये फील्ड विजिबल करना है. ओके, तो आप ये रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो. इनिशियली हमने देखा कि फील्ड क्रिएट करते वक्त हम लोग प्रोफाइल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर दे रहे थे. सो इट मींस दैट फील्ड्स इज इंटरडिपेंडेंट ऑन एस ऑब्जेक्ट एज वेल एज प्रोफाइल. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरडिपेंडेंसी. तो ऐप किसके ऊपर डिपेंड है, टैब्स एंड प्रोफाइल. टैब किसके ऊपर डिपेंड है, बेसिकली इट इज डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट. साथ ही साथ ये प्रोफाइल पे भी डिपेंडेंट होता है, साथ ही साथ ये एप्लीकेशन पे भी डिपेंडेंट होता है. एस ऑब्जेक्ट इज वैसे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन को रिलेट करता है विद द फील्ड्स, क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड फील्ड क्रिएट करते हो व्हेन वी क्रिएट अ एस ऑब्जेक्ट. Similarly, field is dependent on S object. Without using a S object, you are not supposed to create a field. S object होना ही चाहिए. और साथ ही साथ फील्ड के लिए हम विजिबिलिटी देते हैं टू द प्रोफाइल. दैट्स व्हाई फील्ड इज आल्सो interdependent on the profile. So this is all about the interdependency. Let's try to consider the sequence on which sequence you are going to or which sequence you are going to follow while doing all those tasks. Okay,
Let's move ahead with a sequence. Now consider a sequence 1. Here, first of all, we are going to create a app. तो हमने ऐप क्रिएट किया था, फिर हमने एस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर उसके बाद में आप दो ऑप्शंस आते हैं, आइदर यू क्रिएट अ टैब और यू क्रिएट अ फील्ड. सो ऐप इज अ स्टेप नंबर 1, एस ऑब्जेक्ट इज अ स्टेप नंबर 2, and if you create a tab, then tab is a step number 3 and field is considered to be a step number 4. बट अगर आपने एस ऑब्जेक्ट के बाद में पहले फील्ड क्रिएट किया तो फील्ड हो गया स्टेप नंबर 3 एंड एस टैब हो गया स्टेप नंबर 4. कल का लेक्चर्स अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने ऐप, ऑब्जेक्ट, फिर टैब बनाया था, फिर फील्ड बनाया था. आज का लेक्चर अगर आप देखोगे तो आप मैंने क्या किया, ऐप, एस ऑब्जेक्ट, पहले फील्ड बनाया फिर टैब बनाया. सो बोथ द ऑप्शंस आर वैलिड इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस. तो आप ये सीक्वेंस में से कोई भी सीक्वेंस एक फॉलो कर सकते हो. दूसरा सीक्वेंस है कि रैदर देन क्रिएटिंग ऐप, आप सबसे पहले एस ऑब्जेक्ट क्रिएट करो. तो आप देख सकते हो प्रीवियस स्लाइड के अंदर, आप प्रीवियस स्लाइड में जाओगे तो इधर आप देखोगे कि एस ऑब्जेक्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग. ओके, तो दैट्स व्हाई एस ऑब्जेक्ट विल क्रिएट फर्स्ट. तो ऐप की जगह पे आप एस ऑब्जेक्ट भी पहले क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप टैब नहीं क्रिएट कर सकते हो. क्यों टैब नहीं क्रिएट कर सकते हो? क्योंकि टैब क्रिएट करने के लिए एस ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है. विदाउट हैविंग अ एस ऑब्जेक्ट यू आर नॉट सपोज टू क्रिएट अ टैब, एज वेल एज विदाउट हैविंग अ एस ऑब्जेक्ट यू आर नॉट सपोज टू क्रिएट अ फील्ड. इसीलिए सेकेंड सीक्वेंस को अगर हम लोग देखें तो सेकेंड सीक्वेंस के अंदर आपका पहले आता है एस ऑब्जेक्ट, ना ही टैब आएगा ना ही फील्ड आएगा. ओके, सो आप एस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, देन आप फील्ड क्रिएट करो, देन आपके पास में ऑप्शन आता है ऐप और टैब. सो एस ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज द फर्स्ट स्टेप, फील्ड क्रिएशन इज द सेकेंड स्टेप. इफ यू क्रिएट ऐप, then tab is a step number 4. If you create a tab, then app is a step number 4. अदर देन दैट सीक्वेंस नंबर 3 भी आता है जहां पे हम ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करेंगे, एंड रैदर देन क्रिएटिंग अ फील्ड वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ऐप फर्स्ट. सो पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फिर एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे. देन वंस अगेन वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर वी क्रिएट अ टैब और वी क्रिएट अ फील्ड. सो एस ऑब्जेक्ट इज अ स्टेप नंबर 1, application is a step number 2, then if you create a tab then step number 3, तो step number 4 होगा हमारा field creation. If you create a field first, then tab creation is a step number 4. Okay, so this is the sequence number 3. Then consider sequence number 4 जहाँ पे हम क्या करेंगे, s object को step number 1 करके create करेंगे, and rather than creating an app we are able to create a tab. ओके, सो एस ऑब्जेक्ट के बाद में आप फील्ड भी क्रिएट कर सकते हो, एस ऑब्जेक्ट के बाद में आप ऐप भी क्रिएट कर सकते हो, एस ऑब्जेक्ट के बाद में आप टैब भी क्रिएट कर सकते हो. आफ्टर क्रिएटिंग अ टैब यू आर सपोज टू डू टू थिंग्स. वंस अगेन आप तो एक ऐप बना सकते हो या फिर फील्ड बना सकते हो. अगर आपने ऐप बनाया तो फील्ड हो जाएगा स्टेप नंबर 4, और अगर आपने फील्ड पहले बनाया तो ऐप हो जाएगा स्टेप नंबर 4. So these are the four sequence basically we are going to follow while creating your app, tab, as object and all those things. लेकिन अब ये चार सीक्वेंस को अगर हम फॉलो करें तो इसका एक जीस निकलता है. क्या जीस निकलता है कि आप देखो कि आप पहले ऐप बनाओ फिर एस ऑब्जेक्ट बनाओ, देन यू कैन गो फॉर आइदर फॉर टैब और फॉर फील्ड. तो ये एक सीक्वेंस होता है कि ये सीक्वेंस जनरली आप फॉलो करते हो. हम लोग यही सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे, ऐप, एस ऑब्जेक्ट, टैब एंड फील्ड्स. Or you can create S object first, then you have three options. Either you go with a tab, तो इधर आप sequence 4 में देख सकते हो, or you can go with a field, you can check in a sequence number 2, or you can go with the app, you can check in a sequence number 3. क्लियर? सो ऐप के बाद में हमेशा एस ऑब्जेक्ट बनेगा, ऐप के बाद में कभी टैब नहीं बनेगा. एस ऑब्जेक्ट अगर पहले बनता है तो फिर आपके पास में तीन ऑप्शंस ओपन होते हैं, आइदर यू गो विद अ टैब और फील्ड और विद अ ऐप. अब देखो ये जितना डिस्कशन किया, ये डिस्कशन के बाद में एक कंक्लूजन और निकलता है. क्या? मैं हमेशा बोल रहा हूँ आप लोगों को कि देयर इज अ सीक्वेंस कॉल्ड ऐप, टैब, एस ऑब्जेक्ट, फील्ड, डेटा, रिकॉर्ड्स. लेकिन आप इन सीक्वेंस को देखोगे, अभी जो इंटरडिपेंडेंसी और सारे सीक्वेंस हम लोगों ने पढ़ा, इधर कहीं पे भी आपको ऐप के बाद में टैब क्रिएशन नहीं दिखता है. राइट, ऐप के बाद में आप एस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, राइट, लेकिन टैब नहीं क्रिएट करते.
लेकिन फिर भी हम बोलते वक्त ऐसा बोल रहे हैं कि ऐप, टैब, एस ऑब्जेक्ट, फील्ड्स, डेटा, रिकॉर्ड्स। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आप एस ऑब्जेक्ट चाहे कितने बनाना चाहते हो उतने बना सकते हो, आप एप्लीकेशन जितना चाहे उतने बना सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर एस ऑब्जेक्ट को अगर एक्सेस करना है तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है वो कनेक्टिविटी होती है टैब। Without having a tab, you are not supposed to access a S object by using a app, और एप्लीकेशन एस ऑब्जेक्ट को आपको एक्सेस करने का कोई भी चांस नहीं देगा। तो इसीलिए हमेशा सीक्वेंस जब हम लोग बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि ऐप, टैब, एस ऑब्जेक्ट, फील्ड्स, डेटा एंड रिकॉर्ड्स। सो I hope you'll understand this interdependency and the sequence, which is basically